वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और उसके इंटरफेस के बारे में जानेंगे। हम ये भी देखेंगे कि एक्सेल में बेसिक फॉर्मेटिंग, इंसर्शन और डिलीशन Why use Excel macros? Well, if you want to automate boring tasks like copying and pasting data from one place to another, creating reports, or update formatting of your report, Welcome to my video. In this video, I show you how to create a ping monitoring tool and send the result message to your phone using Telegram. Let's go. First you create your own Telegram. En muchas ocasiones nos preocupamos por aprender herramientas de Excel muy complejas que nos hagan ver o parecer como unos grandes expertos de la herramienta. Sin embargo, debes saber que la diferencia en muchos casos las hacen los cambios o detalles tener un conocimiento suficiente sobre las tablas dinámicas, pero de pronto hay ciertas herramientas que parece que nunca hemos necesitado o no nos imaginábamos que eso se podía hacer con las tablas dinámicas. No te despegues de este video porque el día Send the result message to your phone using WhatsApp. Let's go. I have tools to ping each IP address generated using Microsoft Excel as above. How to create this tool I put in the description link of this video. My video. In this video, I show you how to telnet to remote IP address with Microsoft Excel. Telnet is not installed by default on Windows. Choose Programs and Features. Click Turn. एक्सेल में ना नंबर्स या इंडियन रुपीस को हिंदी वर्ड्स में कन्वर्ट कैसे करेंगे, इसका परमानेंट सॉल्यूशन इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। बस एक बार आपको अपने एक्सेल में ये फॉर्मूला सेट करना है, उसके बाद Excel for the web and desktop. The Excel team's been busy adding lots of features, so let's get started. The first new feature is version history in Excel Web. I'm going to go to the File menu and I'm going to choose Info. And now you're going to see a version history button. Graph with Microsoft Excel. Here is a Microsoft Excel file I have prepared with the above basic information. You need to save the file with the XLMS extension.